तो आप सभी का स्वागत है आपके चहीते जानदार शानदार पॉडकास्ट में। मैं हूं आशुतोष, मेरे साथ है कनाडा से धवल, नेदरलैंड की जर्सी पहने हुए वत्सल और नए बाल कटवा के आए हुए मीत राजानी, लॉर्ड मीत राजानी। हमारी ट्विटर से आज एक हमने पोस्ट किया था where we have managed to successfully fool some 3 or 4 people. वो ट्वीट था कि we are proud to announce that we will also be hosting a podcast which will give financial and share market tips. Wish us luck guys. तो वैसे पॉडकास्ट हम कर ही रहे हैं और फाइनेंशियल का भी क्या है, आज मौसम आया है ट्विटर पे एक तरीके से कुकुर मुत्ते के पौधे की तरह हर कोई एक्सपर्ट बना हुआ है। तो उसी के साथों साथ क्या है कि राम भाई को लगा कि ये बात सही है, उन्होंने बेस्ट ऑफ लक बोल दिया। कपूर साहब है, उन्होंने भी गुड लक कह दिया। आयुष लाला ने भी कह दिया। तो खैर हम लोग अगर फाइनेंशियल पॉडकास्ट सही में करते भी है तो उसका टिप शायद कुछ ऐसा रहेगा। मैं बोलूंगा कि भाई एसआईपी में पैसे डालो, मीत बोलेगा रिकरिंग डिपॉजिट करवाओ और वत्सल बोलेगा कि अपने गुल्लक में पैसे सारे डाला करो। तो वैसे ही एडवाइसेस हमारे पास रहेगी। तो वी वुड स्टिक टू व्हाट वी डू बेस्ट, दैट इज एफपीएल पॉडकास्ट। एंड इस हफ्ते आप लोगों ने जो सैकड़ों क्वेरीज भेजी है उसमें से कुछ गिनी चुनी क्वेरीज का हम जवाब देने का कोशिश करेंगे। So let's get started with the queries also. Yes, अगर फाइनेंस की बात करें तो उसमें मैं नहीं रहूंगा क्योंकि मेरे को अकाउंट्स में सिर्फ 39 मार्क्स मिले थे 100 में से। और मेरे पास पैसे नहीं है। So I think we should stick to the queries. और first query is related to Leicester City, and the query is as such: as Barnes and Maddison both are out and looking for the form of Iheanacho, is he an option or not? So no. Technically the guy is saying that should we trust a striker who hasn't scored double-digit goals in God knows how many years? Last 3-4 weeks से Iheanacho का form is excellent. Yeah, true. और दूसरा चीज Madison is back. So but Leicester के upcoming जो 9 fixtures बचे हैं उसमें से 5 fixtures are with top 6 teams. Yeah. So I am not trusting any Leicester player simply because उसके fixtures tough है, and I am banking on Leicester to again drop points, yes, and eventually move out of top 4. It looks hard because they have a 7-point lead at present, but we all know what happened. Looking at the fixtures, anything is possible. So I trust Rodgers to move to 5th. Right. और फिक्चर की अगर मैं बात करूं तो जस्ट मैंने देखा कि लेस्टर का अगला फिक्चर है मैन सिटी होम और उसके बाद है वेस्ट हैम अवे। See, well, I'll not take the bait from both of you calling Rodgers, but ठीक है। तो I mean fixtures are difficult, तो वो हिसाब से और इहेनाचो का प्राइस है 5.7 का प्राइस है। That might be tempting, I mean उसके हिसाब से शायद आपको लग सकता है। Yeah, but like if I say something, तुम अब लास्ट ईयर 9 फिक्चर है, उसमें कोई अच्छे प्लेयर में इन्वेस्ट करो, लाइक यू टेक हिम, फिर उसको 2-3 के बाद निकालोगे, फिर क्वेरी डालोगे कि अब मैं कौन लूं, और इससे बेहतर है कि उसको लो ही मत। तो उसमें 2 बार जाएगा, एक बार लेने के लिए और उसके बाद बेचने के लिए। यार ये नेचो ऐसा प्लेयर नहीं है जो एक बार चलो अच्छा फॉर्म है तुम लोगों ने रख लिया, बट ही इज नॉट गोइंग टू गिव यू दैट रिकरिंग पॉइंट्स। ही इज नॉट अ डिफरेंशियल। अगर कोई डिफरेंशियल के बारे में सोच रहा है कि मुझे मैं इसको 2-3 गेम वीक में ले लूं, तो ये 10-15-20 पॉइंट might happen, like by some miracle. वाला सीन नहीं है इसका। So I don't think avoid. Okay. So moving on to question number 2, we have a Liverpool based question. Don't know who's asked this, but he's asking, should I go for Jota or Salah या फिर Jota and Salah? Okay, just one thing, Meet, one thing. अगर कोई next बार question पूछे कि साला लेना चाहिए निकालना चाहिए, वो question लाओ ही मत। Like that goes without saying कि साला should always be in there. Yeah, I think ये question को लेना ही मत। Yeah, I think he's trying to ask, should he combine Salah with Jota? I guess that's what he's trying to tell us.
I think Spurs has game week 32 as double fixture. I think that's the next question. Yes. Yes, तो I would say कि अगर जोता और साला दोनों लेते हो, although लिवरपूल के फिक्चर्स इजी हैं, you can combine that. Yeah. There is no issue in that. But the thing is कि अगर if you want to have Spurs player, तो अगर सॉन फिट हो जाता है तो you could have double up for Spurs in Son and Kane. तो आप अगर आप में जोता है तो जोता इंसान दोनों है तो आई थिंक यू कैन रिमूव साला फॉर game week 32 only for 1 week. Okay. Only for 1 week. Otherwise I would say कि if you keep Jota plus Salah or Jota or Salah, I think it should be fine. Because Jota is genuine goal threat, so there is no what you can say problem in having him, because plus he scored. He will start all matches and he is scoring. So yeah, he scored 3 goals for issue. He scored 3 goals for Portugal in this international break. So I guess he's found that scoring touch back after his injury. Yeah, I have Jota and Salah, दोनों है मेरे पास. Yeah, that's a good option. मैंने Son अभी bench पे किया because I have like options on bench. So मैंने Dallas को ऊपर ले लिया है और Son will be there until he recovers. Yeah, Meet, what should be the ideal like duopoly which a team should have? Son or Kane or Jota or Salah? Which option is much better? दोनों में से एक If you are asking me for game week 32, then obviously Son or Kane. But no, I'm talking about in general. Yeah. In general, I would say I would rather keep 2 City players, De Bruyne and Gundogan. Oh, okay. Yes. Okay. Simply because De Bruyne and Gundogan both are in good form. Yeah. Okay. एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि I mean I'm being devil's advocate here. Being Liverpool fans here, सारे लोग साला को प्रति हमारा एक अनशेकेबल फेथ रहता है, मगर साला ने पिछले 5 गेम वीक में 12 पॉइंट रिटर्न किए टोटल. सो 12.5 मिलियन का प्लेयर अगर 12 पॉइंट ला रहा है, और अगर वो टाइम पे किसी ने निकाल दिया होता ना साला को, तो दैट वुड हैव बीन अ वेरी स्मार्ट डिसीजन. आई एम नॉट सेइंग कि अगले 5 गेम वीक में उसके 12 पॉइंट आएंगे, बट द थिंग इज के अगला फिक्चर आर्सेनल के सामने हमारा, उसके बाद भी एक आध फिक्चर्स है. It would not be totally foolish to look beyond Salah. I'm not saying निकाल दो, है ना. I mean I don't want के लोग मेरे को hate में देखे. I get the point. Actually past में ऐसा हुआ है. This season only, whenever you have some people had removed him near to 10 or 12 game weeks, the game week they removed him, he scored a hat-trick. हाँ, वो तो है. So that threat with Salah would always remain. मगर in the hindsight, now we all have the benefit of hindsight. और अभी अगर देखते हो ना, किसी ने 4-5 गेम वीक पहले निकाला होता तो that would not have been a bad decision. Yes, but that is again अभी अगर कोई मेरे को पूछे कि मैं अभी निकाल दूं क्या, तो I would still say no. ठीक है, I would not take that bigger risk. मेरी टीम में भी Salah है, so I would not take that risk now. Okay, तुम्हारे पॉइंट क्या सकता है, कैप्टन वगैरह रह गया तो मतलब डबल कर लेगा. तो yeah, just to add to your point कि वो है क्या, तुम्हारे पास साला का कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है who actually delivers as much. Yeah. So अगर ऐसा कोई ऑप्शन होता तो I probably would have like taken that player, but I don't see क्योंकि the day he explodes वो सब कुछ रिकवर कर देगा like in 2 or 3 game weeks. So we just cannot take that chance. I mean, if someone can take it, like it's entirely possible कि साला सिर्फ 2 ही गोल मारे सीजन में. But सही बात है. Even एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बता रहा हूँ कि पिछले 5 गेम वीक में 12 पॉइंट, which is very poor. उसके बावजूद भी साला is at the 4th number behind Son, जिसके सिर्फ 5 पॉइंट ज्यादा है. Exactly. So 5 गेम वीक खराब आने के बावजूद भी अगर किसी ने लेने के बाद वो कर दिया होता ना कि चलो भूल जाओ, तो भी he would not be in a bad position. Yeah, but FPL में क्या है कि आगे बढ़ने के लिए ना you have to sort of look before the curve. तो वो चीज शायद अगर कोई करना चाहे, अदरवाइज मतलब वो क्या है कि आपको स्टैंडर्ड जो ग्रोथ मिल रहा है वो मिलेगा साला के साथ. Yeah, but that's also a risky strategy. Like risky strategy, it might pay off, it might not pay off. Yeah. But that is up to the manager to decide.
Yeah. ये same scenario was in Aguero time. Aguero हर every season 1-2 महीने injured होता है. So when he came back, most people क्या सोचते थे कि अब Aguero नहीं मारेगा, हाँ तो नहीं लेते थे. बट वो फिर Aguero आके every season वो 1-2 हैट्रिक तो मारता ही था. True, Yeah. true. So you need to have him at right time basically. अब Actually- अब नहीं लेते हो तो वो रिस्क है ही, बट अगर तुम्हारे में है इवेंचुअली वो रिटर्न कवर कर ही देता है. see अगर it's like I completely agree is very expensive, मतलब 12 million या ऐसा कुछ प्राइस है राइट साला का. तो Yeah. people might argue that he's not scoring for 5 weeks, but then so let's remove it. But then you either have to have one good player who is at his level or two players of like let's say 5 and 7 or 6 or 6 who can together bring up the same number of points Salah used to do. But उसमें problem क्या होगी that you are using 2 slots for a player of one player's total points. Players like Kane and Son, Kane and Salah are such कि उन लोगों को अगर फॉर्म नहीं भी है तो भी it's worth keeping them in the side because A, they can turn their form around pretty quickly and B, चलो निकाल भी दिया पर वापस लाने में बहुत तकलीफ होगी क्योंकि you have utilized that 12 million which you spent because उसका प्राइस 12 नहीं होगा फिर. You might have sold him for 12 but now he's 12.3. तो वो सब मैथमेटिक्स में पढ़ने की अच्छा यही है कि just stick with them. Because I'm sure around 50-60% of the people would do the same thing. There's also, yeah. Mostly सभी लोगों के पास साला है और they keep Fernandes in there, ठीक है ना? Yeah. Sorry, Fernandes, sorry, वो in there. तो I think अब लोग क्या कर रहे हैं since Jota has scored in last 2 weeks, अब लोग क्या कर रहे हैं कि they are keeping Jota and they are utilizing the remaining budget elsewhere in the team क्योंकि सभी लोगों को bench boost या this card remaining है. So they are acting smart but it could backfire. Yeah. बट एक और चीज है साला के अगेंस्ट में, जो पहले हम क्या करते थे कि साला का ओनरशिप 50% 52% रहता था ना, तो क्या है कि मतलब सब डूबेंगे अपन भी डूबेंगे, साथ साथ में वो होता था और एवरेज स्कोर भी ग्लोबली नीचे आ जाता था. अभी साला का ओनरशिप 29% ही है, ठीक है, which is significantly lesser than what it used to be. Yeah. So people have started abandoning the ship and so far it has paid them well. बट हो सकता है कि शायद अगले गेम वीक में साला हैट्रिक मार के ये 29% वालों के लिए भाई डूबती शिप पे से सबसे पहले चूहे ही निकलते हैं, याद रखना. सही है. इसमें सिंपल that sort of sums this argument up. I mean, so Jota has only scored in last game week. Jota has वो चैंपियंस लीग का मैंने गेम दिया था. हाँ no problem, but the thing is that Jota is also a good buy because I think he has started to score and bring that worth back. इसमें it is very encouraging thing कि Salah की ownership is only 29%. Exactly. Because he automatically becomes a differential now. So if you are Liverpool fan, you should trust him to win Golden Boot again. I think apart from Kane, I don't see any other competition as well. Also, Arsenal game is good because Arsenal. We can use Salah Arsenal as a punching bag. Salah loves Arsenal. Yes. That's also true. So I think we kind of discussed question number 3 as well. The third question is, as game week 32 and is a double game week, and 33 is a double game week for Spurs in particular. Can we postpone the second wild card to 33 rather than 31? No. Who said 32 is double game? I think 32 is double game week for Spurs. 33 is blank for Spurs. Can someone check? Ashutosh, do you have your phone right? Yeah. I'll check. 33 is blank game week for them because they are probably playing cup. If I am not wrong. Yeah. I feel like that's so the case. I guess 32 is 32 is double for Spurs, and 33 is blank for Spurs. Spurs is playing Everton away and Southampton home in 32, and 33 is blank for them. Yeah. Okay. So I don't see, if you have second wild card, you should have already used it. If you don't have used it, you should use it
before 31st game week, because you only have 7 game weeks remaining after that. So what are you saving wildcard for exactly? I'm not sure. Meet, what about triple captain? I think triple captain, you should wait further. If you have used all of your chips, I think you can use 30. You can use triple C on Kane. Yeah, That's your Right, last but- option left. But I am assuming even after 32nd game week, we will get another double game week. double game week for City, either City or लीग Liverpool. कप फाइनल क्लैश हो रही है. नहीं, लीग कप फाइनल नहीं, FA कप क्लैश होगी. I am assuming FA कप क्लैश होगी. अच्छा. There is So- possibility कि 35 और 36 गेम में कुछ डबल आए, और इवन Yeah. 37. लीग कप फाइनल कब है पता है? लाइक वो I guess when वो की जाएगा? अप्रैल में ही था. अप्रैल में था, पोस्टपोन होके मई में. मई में गया. हाँ. आफ्टर प्रीमियर लीग. There are apparently So, fans who are going to come at Wembley. 4,000 Oh. fans को allow किया है. ओके ओके. तो मेरे पास मीत अभी वाइल्ड कार्ड भी है, ट्रिपल कैप्टन भी है और बेंच बूस्ट भी है. तो मेरे को अभी तो तुम्हें इस वीक वाइल्ड कार्ड यूज करके अपने टीम सेट करनी पड़ेगी. ठीक है. उसके बाद वी विल हैव टीम फॉर योर रिमेनिंग 8 weeks, so you can use bench boost and this triple C based on fixtures. So I Ashutosh, used bench boost in last. Ashutosh, if you want to use wildcard and make a proper team, then if you want to make a video about it, then we can do that as well as a bonus episode if you don't mind. कर सकते हैं. हाँ, तो- तो कहाँ- ठीक है, तो आप बता दीजिएगा. ठीक है. So yeah, apart from that, I was just planning to say, having Kane's Son is almost a given for this double game week. But is there a third Spurs player which other teams should have, like a defender or लास्ट another? वीक बेल फॉर्म में लग रहा था. लास्ट वीक मैंने भी काफी लोगों को एडवाइस किया था कि यू टेक Yeah. बेल, Yeah. बट मोरिनियो ने उसको बेंच कर दिया. हाँ. तो आई एम नॉट giving anyone advice to take Bale, because Mourinho, I don't think is He trusting Bale yeah. to start every game. So Not happening. Yeah. going by the safe options, I would say कि have Son and Kane. It's quite. Otherwise quite he's also rotating defense. तो मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता कि Alderweireld लो या Reguilon लो या you take Dyer, because he's rotating everyone in the back line. I guess it's- agree. Yeah, I guess it's just Son and Kane who are guaranteed starters at the moment. Yes. Tengai Yeah, and so- Dombele is another one if you If want Son to is take that risk. if Son is fit, Son को ले लो. हाँ, And exactly. Along with Kane. It's so disrespectful for Spurs that उनके legends उनके club को एक fitness center की तरह use कर रहे हैं for Euro 2021. Like Bale is going back to Real Madrid after the Euros. I mean, both had their उन दोनों के अपने अपने interest है. Like it's just unfortunate कि वो workout नहीं हुआ. So should Anyway, we, I don't like, think Spurs is going to pay Bale like 600 not million a happening, week. Yeah. not So- happening. So question number 4 is based on a team that has just qualified for the quarterfinals of the Champions League. Chelsea, they are doing very well defensively. They didn't concede a single goal in the 2 legs against Atletico Madrid as well. So, and their upcoming fixtures are West Brom and Crystal Palace. So whom should you get? Their goalkeeper or any defenders? Under Tuchel or Tuchel, I don't know what. Thomas you Tuchel, spell yeah. him. Tuchel, yeah. So Azpilicueta has started all the games under Tuchel. Yeah. So I am planning to get him. मेरे Yeah, पास and, 5 से 6 game weeks है and he's been I giving know, me I like know. तभी मैंने ही बोला था कि you have Chelsea defender, और मैंने तब थियागो सिल्वा लिया था पर साला इंजर्ड Yeah. हो गया. जो credit ले ली. अरे बोला था चैट पढ़ के देख ले. Yeah, I know. मीत की छुट्टी मत बिगाड़ो यार. तो तब मैंने थियागो सिल्वा लिया था, साला इंजर्ड हो गया. I think Chelsea defender is a must have. Azpilicueta I would say, या फिर मेंडी ले लो. रूडिगर का ऐसा है कि लास्ट मैच आई गेस ही वाज रोटेटेड. अगर थियागो सिल्वा आता है तो आई डोंट नो व्हाट वुड बी देयर बैकलाइन, बट Azpilicueta so far has started
all the matches under him. So I'm banking के Azpilicueta is rotation proof और Mendy रहेगा because Kepa तो I don't think has future under Kepa is done. He's done. Yeah, exactly. I guess so I'm not giving advice on Rudiger. Yeah, I guess although he's only... cheap, you can take chances, but I am not advising for it. I think for me, Azpilicueta is like the best option. वो थोड़ा expensive है, but if you want someone who will start all the games, I think he's the best bet. I guess the best option of your defense should be 2 City defenders and Azpilicueta. Or you if you want to, I think Ruben Diaz, Azpilicueta and another you could rotate with. For example, this week Dallas रख सकते हो double game week में, you can have bank on Spurs defender, or maybe you can rotate with the third defender. I guess that's the 6th question. Stones or Cancelo? Who's a better pick? I would say Cancelo. Stones, I don't know. Stones has been rotated. But Stones Cancelo is better pick than Stones because Cancelo has been in really good form. But if you ask me who to pick from City defender, everyone knows the answer. That it should be Ruben Diaz. Ruben Diaz, yeah. And I guess we already discussed question number 5. Is Kane a must-have seeing Spurs fixture? Obviously. Yes, it is. We already discussed this, I guess, during that double game week. That if you can keep Kane beyond the 29th fixture because he's a fixture rotation proof. So, I think he should be there for the rest of the season now. Yes, I think he should. Definitely. So I guess we have just covered every question. I'll just give a brief about what we answered. The first question is no, you shouldn't pick Iheanacho because Maddison is back. Jota or Salah is a must-have. Jota, if you are playing for differential, then he's a good option. Double game week question is Kane and Son, and if you want to risk, you can pick up a Spurs defender. For Chelsea, don't go for either Mendy or Rudiger. Go for Azpilicueta. Kane must-have, yes. Cancelo or Stones, go for Cancelo, but have Ruben Diaz, De Bruyne and Gundogan as your 3 players from Man City. I guess that's all the questions this week. Just one question out of this. Any particular captaincy choice for this week? I'm going with Salah. This week, एक सेकंड मेरे को फिक्चर्स देखने दो इस वीक क्या. हाँ sure. वो तेरा प्रेडिक्शन वाला खोलना, उसमें पता चल जाएगा कि फिक्चर्स क्या है. हाँ. Good way of using this slide. तो फिक्चर चेल्सी, वेस्ट ब्रॉम, लीड्स, शेफील्ड, लेस्टर, मैन सिटी, आर्सेनल, लिवरपूल, साउथहैम्पटन, बर्नली, यूनाइटेड, ब्राइटन, एवर्टन, पैलेस. I think अगर ब्रूनो रखना है तो रख सकते हो. Kane also doable and Salah also doable, but I would say either Kane or Bruno. Okay. So it's like 50-50 or you are inclining more towards one of them? I am undecided because Newcastle is not in good form, तो Kane भी रख सकते हो. और दूसरा यूनाइटेड होम है वर्सेस ब्राइटन डिफेंसिवली गुड बट यूनाइटेड होम में अच्छा खेलता है. एक आध पेनल्टी तो मिल ही जाएगी. हाँ तो उस हिसाब से आई वुड से आइदर ब्रूनो और केन. अगर वो भी नहीं रखना तो आर्सेनल, लिवरपूल का साला का कैसा है कि जोता माइट कट हिज रिटर्न. तो आर्सेनल के सामने ऑल्दो साला का रिकॉर्ड अच्छा है, तो इफ यू आर willing to take risk, so I guess Salah is also fine. Yeah, I'm going with Gundogan मत रखना क्योंकि गुंडोगन 3 जर्मनी के फिक्चर्स खेला है. There is possibility Pep benches him when he arrives from international duty. Yes. Good point. But I guess there is one question. I guess it should be a short answer. Is that people are getting confused between Gundogan and Soucek. So what is your pick on those two? Who should you have? Gundogan. I think Gundogan. Soucek has a difficult fixtures. Okay. Who is West Ham playing this season? This weekend? Wolves. Yes.
उसके बाद उसके डिफिकल्ट, they are difficult to go 3 fixtures. और दूसरा क्या है, Soucek is DM, Gundogan is playing much more advanced, so there is no question of who to pick from Gundogan or Soucek. लीड्स भी रख सकते हैं, बामफोर्ड या राफिनिया is also a good differential to captain to have this week, but I think Kane is safest choice or Bruno. Okay. So I guess Ashutosh, you can wrap this up. I think we are done with all the queries. बढ़िया, मतलब कहते हैं ना, काफी टाइम के बाद मेरा भी कमबैक हुआ. बीइंग एन एक्स मॉडरेटर बड़ा अच्छा लगा कि वत्सल इज ग्रेशियस इनफ कि मेरे को शुरुआत और एंडिंग करने दे रहा है. और जैसे कि हमने बताया कि जो क्वेश्चन की भी समरीज थी वो वत्सल ने बहुत ही अच्छे से समझा दिया है. तो आई बिलीव जो पिछला गेम भी 25-27 गेम एवरेज ग्लोबल एवरेज रहा था, उसके सामने ये गेम भी आई थिंक इट शुड हैव अ हायर ग्लोबल एवरेज एंड एवरीबॉडी शुड डू वेल, एंड आई एम टू डू वेल एंड create a big distance with Dhaval and close this debate of who's the better FPL manager once and for all. So that's it from my side. आपको भी कुछ add करना है? I'm already there. मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ. Ashutosh, just tell the viewers that we are just 19. You can say that again. Yeah, Ashutosh, just tell the viewers that we are just 19 subscribers away from 100 subscribers. So if they want to see a bonus episode with some of the other guys, then I mean, I would request everyone के मतलब मेरे को रात में सपना आया था कि हमारे 100 सब्सक्राइबर होंगे, उसी के बाद में विराट कोहली का अगला सेंचुरी होगा. तो अगर आप चाहते हो कि उसकी सेंचुरी हो जाए तो हमको 19 लोगों का जुगाड़ करवा के हमारे 100 सब्सक्राइबर करवा दो. 19 आरसीबी फैन तो मिल ही जाएंगे. मैं अभी 10 फेक अकाउंट बनाता हूँ, रुको. So it's high time LFC Ahmedabad has 100 subscribers and it's high time Virat Kohli also has an international century. Also Dhaval's return has boosted our views in our last podcast. So I think moderator battle is intensifying. Right. I mean, लोगों को लग रहा है धवल जब भी आता है तो लोगों को लगता है कि ये लोग ने इंग्लैंड से कोई कहते हैं ना ऐसा विदेशी इंसान को ले आया है. Imported product. Exotic accent से ही लोग मतलब ऐसा सुनने के लिए बैठ जाते हैं 5-7 मिनट तो कि ये कह क्या रहा है इंसान. नहीं, ऐसा नहीं है. लोगों को क्या है, एक्चुअल एनालिसिस पसंद है लोगों को. क्या मेरे को और मीत को देख के लगता है कि ये देसी लोग हैं, मगर धवल में वो एकदम इंटरनेशनल फ्लेवर आता है. और मेरा क्या, मीत इज ऑथेंटिक. तुम्हारा दूध और दही दोनों में पैर है. So yeah, I guess that's it. Yeah, that's it from our side. Like करो, subscribe करो, comment करो. I mean, we are looking forward to good comments from every one of you. So that's it from our side. You'll never walk alone. Goodbye. Goodbye. Goodbye everyone.